everyone. Today's topic is excretory system. What is excretion? Excretion is the process of removing waste and excess water from the body. Means जिसमें से हमारे सारे unwanted substances या हमारा metabolic waste eliminate होगा. That is the process that is known as excretion. What is the function of this system is that it addresses main two issues. That is first in osmotic balance and second is your get rid of metabolic waste. What is osmotic balance? Managing the water and solutes in the body. पूरा water का main water balance और solutes का balance को maintain करना, that is called osmotic balance. And second thing is which is performed by this system, that is your get rid of metabolic waste. So what is metabolic waste? The metabolic waste are those waste. It can be your carbon dioxide waste, which is your gaseous waste, or other nitrogenous waste, which occurs. Nitrogenous waste, which are those which occur due to the breakdown of protein. That is your urea, ammonia. All these are your nitrogenous waste. So what are the waste which in this system has to be eliminated? So there is first is your gaseous waste, that is include carbon dioxide, which is a byproduct of cellular respiration, then ammonia and urea from protein catabolism, and uric acid from nucleic acid catabolism. So these are the main excretory product. One is your carbon dioxide, other is your bile pigment, second is your nitrogenous waste, and third is your excess mineral and water salts. So carbon dioxide is removed by lungs, excess mineral and water salts are removed by skin, then liver produces this bile pigments and which are excreted out, and then the nitrogenous waste is removed from the kidney. And then there is one small largest intestine which also excrete waste in the form of a fecal material. So beside all these organs that like kidney and ureter, urinary bladder and a urethra, so there are other organs which also take part in excretion. That is your lungs, which are part of other systems also. जैसे lungs है तो lungs हमारा respiratory system का organ है, but ये carbon dioxide gas भी remove कर रहा है. Then skin हमारी integumentary system का part है, but now what is the function of skin is that it is excreting water, salt and some waste. लिवर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है और ये भी हमारा एक्सक्रीट कर रहा है सब्सटेंस लाइक बाइल पिगमेंट, हेवी मेटल्स, टॉक्सिन, बैक्टीरिया थ्रू द बाइल. एंड द मेन ऑर्गन ऑफ दिस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इज योर किडनी. ओके, तो वन बाय वन तो अदर ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड इन एक्सक्रीशन आर, वन इज योर स्किन, सेकेंड इज योर लिवर, third is your lungs, and fourth is your large intestine. These are the other organs which are involved in the excretion. So first is your skin. So skin is the part of integumentary system. So main role of skin is sweat production, that is to cool the body and maintain temperature homeostasis. And sweating also eliminate excess water and salt as well as small amount of urea. What is the main function of skin is हमारा sweat produce करता है और हमारा water को और salts को eliminate करता है, excess water को. Next is your liver. Liver has the major functions are पहला bile secrete करना ताकि digestion हो सके, और liver एक और pigment है. There are two pigment which are secreted by the liver, that is your bilirubin and biliverdin. And bilirubin होता है हमारा कि हेमोग्लोबिन जब का उसका कैटाबॉलिज्म होता है, ब्रेक डाउन होता है रेड ब्लड सेल्स का, तो उससे एक पिगमेंट बनता है, दैट इज कॉल्ड बिलीरूबिन. एंड दिस बिलीरूबिन इज अ वेस्ट एंड विच इज रिमूव्ड आउट, एंड दिस इज द कलर ऑफ द फीकल मैटर इज ड्यू टू दिस पिगमेंट ओनली. Then is your large intestine. It is an organ of excretion. Main function is to eliminate solid waste that remain after digestion of food and the extraction of water from the indigestible matter in food waste. So what is this? That the other organs involved are your lung, skin, liver, kidneys, and your apart from kidney, they are your lungs, skin, liver, and your bilirubin is a brown pigment that gives human faces its characteristics brown color. Okay, so this is the waste product.
तो bile which is secreted from the liver, it contains the waste product bilirubin. Then this is your lungs. The lungs are responsible for the excretion of gaseous waste, that is your carbon dioxide. Carbon dioxide को remove कौन कर रहा है? lungs कर रहा है, जो हमने पहले which we have studied already in the respiratory system. तो वो alveoli होता है मेन, जहाँ पे एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, एंड देयर फ्रॉम देयर द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड आउट. Okay, so now the organs which are involved in the kidney in the excretory system are these are a pair of kidney, then there are a pair of two tubes which are called the ureter, then there is a urinary bladder, and then there is urethra. Okay, so these are the main organs which are involved in the excretion. At the top of the kidney there is a cap like structure. This is a gland which is called an adrenal gland. तो किडनी का मेन फंक्शन क्या है हमारा? अगर हम सिंपल बात करें तो किडनी का फंक्शन है यूरिन प्रोड्यूस करना, और जो होता क्या है, it is produced through the nephron which we will study later and in the second section. तो किडनी ने यूरिन प्रोड्यूस करा एंड दैट यूरिन इज कलेक्टेड इन दिस यूरेटर. इस यूरेटर के थ्रू व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरेटर? ये ट्यूब है, इट विल ड्रेन द यूरिन विच इज फॉर्म्ड इन द किडनी फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर. So simply what is the purpose of this ureter is to carry the urine, and then there is the bladder from where the urine is stored. The urine is stored in this bladder, and the urethra from where the urine is removed out, it is excreted out. That is known as function of urethra. So this is your and what is the role of adrenal gland? That is your emergency. It produces an emergency hormone, which we will study in the different chapter. So that is the main role of main parts of organs of kidney. So next topic is that what are the functions of kidney? First thing is that what are kidneys? So kidneys are your bean-shaped organs. These are located in abdomen on either side of the backbone, and these are your basic filtration unit. यहाँ पे हमारा filtration हो रहा है, और ये किडनी के अंदर जो हमारा नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन जो होता है जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, मतलब एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं जिनका वर्क होता है ब्लड को फिल्टर करना और वेस्ट को रिमूव करना. मतलब किडनी में इट इज़ मेड अप ऑफ नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन ये काम कर रहे हैं. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन? टू प्रोड्यूस रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट एंड इट फिल्टर्स द ब्लड. और किडनी बनी होती है हमारे millions of nephrons, and function of kidney is it produces urine. इसमें सिर्फ यूरिन प्रोड्यूस करेगी, and the nephron, these are the which perform the primary task of filtering blood and removing waste product. So this is the anatomy of kidney. It's a bean shaped, it looks like a bean shape, 150 gram of weight, 11 centimeter long, 6 centimeter wide and 3 centimeter thick. Okay, and it is located in the abdomen on either side of the backbone below diaphragm. Right kidney is slightly lower because it is the space is occupied by the liver. Then it is extend from T12 to L3, thoracic vertebra 12 से लेकर lumbar की 3rd तक, and these are also protected by the rib cage. Next organ is ureter. So ureter is that tube which carries the urine from kidney to the urinary bladders, and ये दो होती हैं, एक किडनी से अटैच है, और जो upper half of the ureter is located in the abdomen and the lower half is located in the pelvic area. Next is urinary bladder. It's a hollow stretchy organ in the lower part of your abdomen. It stores urine before it leaves your body through your urethra. Means the main function of urinary bladder is कि उसको urine को store करना है. And what are the conditions that affects your urinary bladder? That is your cystitis, bladder stone, and these makes your urinating painful, difficult or uncontrollable. So bladder वहाँ पे होगा. Bladder is that area which stores urine. Next is urethra. Urethra is a tube that lets urine
leave your bladder and your body. Okay, and from this is the main part from where the urine is excreted out. So these are the 4 organs which are involved in the excretion. One is your kidney, other is your ureter, third one is your urinary bladder, and fourth is your urethra. So now the next topic is anatomy of your kidney. अब किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है ये. इसका बाहर का इफ वी सी के बाहर इसकी जो आउटर है कैप्सूल है, वो उसकी जो बाहर की लेयर है दैट इज कैप्सूल. फिर उसके बाद दिस इज द रेड वन पोर्शन, द आउटर बाउंड्री, दैट इज कॉल्ड renal cortex. Then the inside one, that is called renal medulla. Then there is calyx, then renal pelvis, and then from where this is the blood vessels, from where which is attached. तो जहाँ पे ये blood vessels attach है उस part को बोलते हैं hilum. तो it is that part जहाँ से entrance होती है, जहाँ पे ब्लड वेसल्स वगैरह की एंट्रेंस होती है, जहाँ पे 3 ट्यूब्स हैं ये. और वन इज़ योर रीनल आर्टरी, अदर इज़ योर रीनल वेन, एंड द नेक्स्ट वन इज़ योर यूरेटर. ये तीनों जो है यहाँ पे अटैच है. दिस डिप्रेशन इन दी किडनी दैट इज़ कॉल्ड hilum. This is your external view of kidney. So there is one renal artery, renal vein, and this tube is ureter. Okay, so now the kidney has 3 main regions: outer cortex, medulla, and the renal pelvis. And there's a depression that is from where all the 3 tubes are entering. That is known as entrance is known as hilum. Hilum is the concave part of the bean shape where blood vessels and nerve enter and exit the kidney. यही मैंने आपको बोला अभी कि एक एंट्रेंस है जहाँ पे हमारे ब्लड वेसल्स और नर्व एंटर कर रहे हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड अ हीलम. अब सबसे पहले हम आते हैं रीनल कॉर्टेक्स पे. तो रीनल कॉर्टेक्स जो है हमारा वो डार्क ब्राउन इन कलर है और ये हमारा है ग्रैनुलर. ग्रैनुलर क्यों है? क्योंकि जो नेफ्रॉन्स हैं, जो नेफ्रॉन्स का आगे हम अभी पढ़ेंगे, द अदर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज़ योर ग्लोमेरुलस एंड योर रीनल कार्पसल, द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड, वो सब इस रीजन में आएगा रीनल कॉर्टेक्स के अंदर. सेकेंड आया हमारा मेडुला, जिसमें हमारे पिरामिड स्ट्रक्चर्स आएंगे और दीज आर कॉल्ड द रीनल पिरामिड. और रीनल पिरामिड्स के बीच में जो स्पेस है दैट इज़ कॉल्ड द रीनल कॉलम. एंड आफ्टर this renal pyramid then extend into this whole renal pelvis, and which leads to the ureter on the outside of the kidney. Then the renal pelvis branches out into 2 or 3 extensions called the major calyces, which further branch into minor calyces. Ureters are urine bearing tubes that exit the kidney and empty into the urinary bladder. Means basically हो क्या रहा है, I will show you in this diagram, this one. Yes, तो ये जो बाहर का स्ट्रक्चर है ये है हमारा कॉर्टेक्स. ओके, सो कॉर्टेक्स में हमारे बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं और नेफ्रॉन्स क्या काम करते हैं, दैट इज इट इज़ प्रोड्यूसिंग द यूरिन और वो फिल्टर कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट वहाँ पे है. फिर उसके बाद ये ट्रायंगुलर जो स्ट्रक्चर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, दीज आर नोन एज रीनल पिरामिड्स. और इन पिरामिड्स के बीच की जो स्पेस है वी कॉल दिस रीनल कॉलम. इसका ऊपर वाला जो है दैट इज़ कॉल्ड बेस पिरामिड्स का, और जो जहाँ पे ये येलो पार्ट अटैच हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड अ पिरामिड का एपेक्स है. ये एपेक्स है, ये बेस है इसका, एंड द स्पेस बिटवीन दीज टू पिरामिड इज कॉल्ड रीनल कॉलम. अब जो ये वाला येलो वाला एरिया है इसको दे कॉल इट पेल्विस. लेकिन पेल्विस से पहले क्या बनेगा, ये पहले आएगा माइनर कैलिक्स में. तो ये पहले आता है माइनर कैलिक्स में, फिर माइनर कैलिक्स से ये मेजर कैलिक्स में आएगा, एंड मेजर कैलिक्स से फिर ये रीनल पेल्विस आएगा. मीन्स फर्स्ट इज कॉर्टेक्स, देन मेडुला, देन दिस इज योर रीनल पिरामिड्स हमारे माइनर कैलिक्स, देन मेजर कैलिक्स, एंड देन पेल्विस. सो मेन यहाँ पे यूरिन इज प्रोड्यूस्ड, यूरिन इज रीच्ड इन दैट पेल्विस एरिया, एंड पेल्विस से फिर हमारे यूरेटर से इट इज़ एक्सक्रेटेड आउट.
So this is your the three parts anatomy of your kidney. The three parts, it is made up of three region. One is your outer is called cortex, inner में medulla, and then is your renal pelvis. कॉर्टेक्स में हमने बोला जो नेफ्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे मिलियंस और मिलियंस नेफ्रॉन है. रेड पोर्शन में पिरामिड वालों में यहाँ पे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स है. और नेफ्रॉन का ऐसा नहीं होगा कि नेफ्रॉन्स का सिर्फ टॉप का स्ट्रक्चर होगा. नेफ्रॉन का ये रीनल कार्पसल और पीसीटी और डीसीटी आता है कॉर्टेक्स में, और मेडुला में आता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट और हेनलीज लूप. सो दिस वाज योर एनाटॉमी ऑफ योर किडनी.